be a pavement or a sidewalk? When I finally lay my eyes on you, someone I've already loved, will you find your way out of the blue? Will it be my flat or your apartment? When I finally realize I do, will we meet on Baker Street or find ourselves on Melrose Avenue? Hello. Okay, so I think I'm live and let's start the stream. I hope to do a long DSA stream today because I spent my entire day studying microeconomics and parameterized complexity, though I could not make much sense out of them. But I have spent fair amount of time trying to perform good for academic exams in academic exams that I have in my upcoming exams starting from 1st of September, which is day after tomorrow. So that is the reason why I'm not able to stream in the mornings and I'm streaming inconsistently in terms of time. Though I have been streaming continuously for past 27 days, but there have been some days when I just streamed for about half an hour or just barely 45 minutes because I didn't have enough time to do DSA. But today, currently it's 7 o'clock, and I hope to stream until 9 o'clock. I'm not sure if I would be able to do that. And also during the stream, I would be solving a couple of live OA questions for Amazon. A friend of mine is giving their Amazon test, so they will send me question and I will solve them during the stream also. Apart from that, there isn't anything really interesting right now, so I think we should start, right? To stream. I think we should start. All right. So this is the question that I'm gonna do right now. Sorry for the noise. Yeah, this is the question that I'm gonna do right now. The question is longest sum subarray with sum equals to k. Um, my theory is that we can use a sliding window. So let me think for this question. What if my array is something like 15, 5, 10, 2, 7, 1, 9, and I want to have sum equal to 15. Let's say this is 75. Let's say, okay. Now I start my I and j from here, and I say if the first number is less than 15 or not. So if it is greater than 15, in that case, I would want to simply um, if a number is greater than 15, in that case, my start will become I plus 1, which is, let's say, end plus 1 because end is greater and end will also be plus equals to 1. This should be the case. Else, if the number is not greater, okay, I have several confusions. I have couple of confusions. First one is Uh, let's say cur equals to array of n. This is my current number. If the current number is greater than k, in that case, I will have to start my subarray from the next number. I cannot take this particular number, right? So that's that. And if my cur is less than equal to k, then I will check if my, let's say, sum, right? So I need to have one cur sum, which is initially 0. So I say if my cur sum um, plus the current number. If my current sum, the sum until now, plus the current number, yeah, when I'm doing this, let's say when I'm doing this, I'm increasing the subarray, I need to make sure that the current sum is 0. Now I say if the current sum plus cur, let's say 5 plus 2 is less than 15, right? This is, so I can say less than k. In case it is less than k, in that case I need not change anything. I can simply increase this, right? Um, elif I can check if the cur sum plus cur equal to k. In that case,
my answer will be max of answer comma n minus start plus 1. And since it has become already equal to k, then I would want to increase my start. So before increasing the start, I need to say cursum minus equal to array of start, and I have to say start plus equal to 1. Um, all right, and if the sum has exceeded the amount, then I have to decrease the sum by one amount, one, let's say, and I have to increase start. Right, and I have to keep doing it forever. And in this way, I should be able to get the answer. But let's see if this works or not, because I have doubts whether or not this should be okay. So the current answer I get is 0, which is not the correct answer. The reason, let's try to figure out the reason. The array was 10, 5, 2, 7, 1, 9. 10, 5, 2, 7, 1, 9. The sum was supposed to be 15. I started with and equal to 0. My current was 10. My current is definitely less than k. So the next thing that I'm going to do is I'm going to say cur sum. Oh, I didn't do that. Maybe, yeah, when I'm increasing this, in that case, I need to do cur sum plus equal to um, array of and minus 1, because I am increasing one number. So this works. Now, it works for the test cases. Will it work for everything else also? Uh, okay, let's say my array length is 3, the sum is 16, and my array is minus 1, 2, and 3. I think I figured out that this is not going to work. The reason is that I have negative numbers also. Yes, sir. So this is fine, but it is not going to work because I have negative numbers. This will work for all the positive numbers, but since I have negative numbers, I might want to modify it a little bit. How will I modify it? I need the sum to be 15. So I think I have the idea. The idea is that I need to have a hash map. Okay. And what I'm going to do now is I will have to remove this. Okay. Now I have several options right here. My start end is 0. That's fine. Uh, yeah. So I'm gonna say my cursum is plus equal to cur. Right. I have added something to the cursum. I'm gonna say if my cursum equal to k, in that case my answer equals to max of answer comma and minus start plus 1. Right, there is something else that I want to do. I have some particular sum. I'm gonna say hash map of this cursum is hash map of this hash map dot get cursum comma 0, because I don't have this sum plus 1. I'm gonna say if hash map dot get cursum comma minus 1 not equal to minus 1. In that case, not cursum, let's say if I never got, okay, hmm map. The thing is, since I have negative numbers, there are going to be several really weirdly interesting cases. Let me try to create one of that case. So let's say I want the sum to be 6. My first number I have, that is 7. Second one is minus 1. Then there is 2. Then there is 3. Uh, and then there is 1, of course. Then there is 2, and then there is minus 2. Right. So now if I see the largest subarray with the sum 6. So first subarray is definitely this. It has sum equal to 6. Right. 7 minus 1 is 6. But then when I do plus 2, so when I do 2, 3, 1, it is 5. uh, 5 plus 1 6. Then there is 7 8. Let's say that this is minus 1. uh, 3 to 5 or 1 6, right? That was supposed to be minus 2. Okay,
So now the biggest subarray would be this one, right? Um, how will I find it out? So I can start from here. My current sum plus this sum is 7, which is greater than 6, but it's fine. Next up, I have my current sum equal to 6, and so I will update the answer. Next up, my current sum would become 8, right? Yeah. Um, for here, my current sum will be 11. Here, my current sum will be 12, and it's gonna be 14 right here, and it's gonna be 12 again. So I've had current sum as 6 already. 2, 3, 5. Yeah, I have had my current sum as 7. I have had my current sum as 6 already. Uh, 6 to 8, 3, 11 or 1, 12. यहाँ पे my current sum is 12. Maybe inside of the hash map I need to store the index of the sum, and at every point I can check if the sum that I have currently uh, minus 6. Maybe that could be a reasonable approach. So what I'm basically saying is that I have to save as hash map of current sum is hashmap.get current sum comma, so it is basically hash map of current sum, uh, since I need the biggest number I can say if hashmap dot cur sum comma -1 equal to -1. If it is -1, then I say that the index is supposed to be end index. That's the point where the hash map has the sum equal to this. Now what I can do is I can say if hash map, okay, maybe I can do this and say uh, last index equals to hash map dot get, my entire sum was k, so maybe I can do cursum minus k, right? Or k minus cursum comma 0 comma -1. And what I can do is I can say if my last index not equal to -1, my answer is max of answer comma and minus last index plus 1. Seems like a interesting approach. Hash map of current sum is end. It throws away. Are we getting a memory error by the way? Oh, because I've never increased end, so I can increase end by 1. So then in this case it is not a sliding window at all. It is more like a prefix sum array. It's more like a prefix sum array. My array has 6 as the size and this is 15. I have this as 2, 5, 2, 7, 1, 9. It is not exactly a sliding window, is it? The output is 0 in this case. Why? Because if you're talking about the prefix sum, then the prefix sum is going to be 10, 15, 17, and 7, which is 24, 25, and 9, 34. You want the sum to be 15. And you check, maybe this is 0 is to 1. Maybe this would make a little bit of sense. So what you would say is
if hashmap dot current sum is -1, so 10 is not there, so I say that at the point of 10 I'm going to have my end value, which is 0 right now. 10, and then I'm also going to check if that k which is 15 minus cur which is 10, so I'm going to say 15 minus current sum at here, which is 10. So if 5 is already in the hash map, what does it mean? What does it signify? It signifies if there was a sum up till 5 here. hmm It does signify that, right? It does. So I should not be having that as the end index. Uh, Whenever I am going forward, I need to have a start index somehow. How will I have a start index? We are getting somewhere. I feel that we're getting somewhere. Let's say I have 10, 5, 2, 7, 1, 9. I have to make my sum as 15. So what I want to do is I want to have a hash map that says that okay, you have a window of sum 15 and the start index for that window is 0 and end index is 1. Why do I want that? Because let's say I want to have my sum as, let's say this is -2. Let's say I want to have my sum as 20, right? Ah, this is slightly complex now. My 7 minus 1, 2, 3, 1, 2, minus 2. Now I want to have sum as 6. So when I am here, my sum is 12. Uh, I can do 12 minus 6, which is 6. I can check when I had the sum equal to 6. Sum equal to 6 was at this point, right? My sum was 6 right here. But that was the cur, not the array. Uh, so I have to have a sliding window, and whenever my cur sum exceeds the k, right? Is that how it's gonna work? Whenever my cur sum exceeds the k, I don't care, right? If my cur sum is greater than k, that case I need to start my index from here. Start becomes n plus 1. Oh, I have been successfully failing in figuring out how to solve this problem. Long DSA with some k lead code. I believe I've solved this problem some time ago. Maybe even in this. Subarray, total number of subarray host sum is equal to k. इस case में we are trying to find that. Subarray sum equal to k. Prefix sum and a hash map. I'm trying to do the same thing. Not exactly the same thing, but yeah, almost the same thing.
How about we start from scratch once again? Um, let's say I create a prefix summary. Um, and the first element is gonna be 0. And now I'm gonna say for I in range length of array 1 से लेकर के, let's move to length of array, and I'm gonna say prefix dot append prefix of -1 plus array of I. Now, hmm, so I have the prefix some subarray. Hmm, hmm. Let's try to do that once again. 7 comma -1 2 3 1 -2 1 2 and -2. Now I want to have my sum equals to 6 in this array. I want to find a subarray having the sum equal to 6. If I create a prefix sum subarray for this, it's going to be 7 6 8 11 12 14 and 12. So this is sort of my prefix sum subarray for this particular array. Now, how can I use this prefix sum subarray to find out how many subarrays are having the sum equal to 6? So that can be easily done by saying that I will loop over this subarray, let's say, and I will check um, if my sum is equal to 6 or my sum minus 6 is already in the array. Mhm. Right. Mhm. Maybe yeah. So maybe that could be a solution. What I can do is I can loop over this subarray, let's say, for a or maybe using a while loop. Let's use a while loop for now. And what we're gonna do is basically we're gonna create a hash map also. My hash map will say nothing. For example, right now my hash map says that for 0 it is -1. Okay, which signifies that the sum 0 is present at the index -1 when I'm not taking anything. Okay. Now what I can do is I can say my cur equal to prefix of I, which means the current index at current index the sum is 6. Let's say for example the sum is 6 right here, and what I'm gonna do is I'm gonna check in the hash map my hash map has uh, if my hash map has k minus cur. Alright, if my hash map has this, so maybe even let's just do this. Okay, uh what is the maximum value of k? K could be negative 0 also, or it could be literally anything. Slightly similar problem, similar solution should work here probably. This is ARR, let's call it array. Now prefix sum I've created a hash map. In this case my k is also negative possibly, but what I say is that if this comma -1 not equal to -1 means this has existed somewhere, I'm gonna say answer equal to max of answer comma I minus hash map of k minus cur plus 1, right?
I forgot to increase the value of I in the loop. So this is not correct because it is going to return me the length, and I do not need the maximum length. What I need is I need to find out the number. So I can just increase answer by 1. Hash map of cur is at index I. It still returns me 1, comma 1. My current sum is 1, my current sum is 2, so k is also 2, 2 minus 2 is 0. So what I can do is I can check 2 minus 2 is 0. So it is not minus 1, so I increase answer by 1. And my hash map of 1 is 0. Hash map of 1 is 0. Or does that make sense? Slightly, maybe? Not sure. Um, then my sum becomes 3. Prefix sum becomes 3. And once again, I need the sum to be minus 1, but it isn't. Maybe cur minus k would work. I'm not sure if this is even going to work because this question may I have been, yeah, I've got caught multiple times. So what is different here? I have prefix sum, I have hash map. I look over the array, I count the prefix sum, and I check if hash map has prefix sum minus k. If it has, then I increase it that many times. Otherwise, I do this. Very similar to what I'm already doing, right? Instead, mm, mm, hmm, 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 hmm. Uh, hashmap dot get cur minus k. This is very weird. Let's check for this case. यहाँ पे I can still do the same thing. I'm not able to understand कि मैं वो क्यों नहीं कर सकता जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. So what I'm saying is current equals to prefix of I.
if hashmap dot get k minus current, or maybe let's say cur minus k is not equal to -1, then I increase the answer by instead of increasing the answer of max comma I minus hashmap dot, or maybe hashmap of this plus 1, right? And right here I say that if it was negative, no, not this one. Let's say if I say if hashmap of cur hashmap dot get cur comma -1 equal to -1, in that case let's say hashmap of cur is equal to current index. And when you're going for 0, when cur minus k is 0, then you can simply say that for this index for 0 yes. Mm, the answer is 5. Answer is supposed to be 4. My answer is 5. Okay, now we have a question for us. So we're gonna open the question right here and we're gonna solve it. This is a slightly different problem. अरे ये तो टेस्ट केस फेल हो रहा है, मतलब इसको तो मेरे को ट्राई करना पड़ेगा. Given an array of integers, create a two-dimensional array where the first element is a distinct value from the array, second element is a value from the frequency within the array. Sort the resulting array descending by frequency. If the multiple values, they should be sorted ascending order. May. I know how to do this. What I'm gonna do is I'm gonna open IDE GFG. IDE GFG. Supposed to be a very easy problem. What I'm gonna do is I have defined group sort. Is it group sort of array, right? Group sort of array, right? What I can do is I can import something. I can import from collections import come to key. Array come to key, isn't it? Yeah. And then what I can say is my HMP hashmap is an empty array for I in range length of array. That equals to array of I. A hash map of cur is hash map of cur hash map dot get cur comma 0 plus 1. So this is going to take care of all the frequencies. Now once I have all the frequencies, what I can do is I can create a answer array to be empty array, and I can say for key in hash map dot key answer dot append. What do I have? I have to append 3 with the frequency 2. So I have to append the number which is the number is key comma hash map of key, and then I have to answer equal to sorted answer comma key equals to come to key function compare, and I can have defined compare between a comma b, which is gonna be if a of
Now what is it? If we have by descending the frequency, so I need the max frequency first, and if multiple values have the same frequency, they should be sorted ascendingly. So the frequency is in the second one. So if a of 1 equal to a of b of 1, then I have to sort them like ascending order. So return a minus b, a of 0 minus b of 0, right? Uh, Otherwise, return b of 1 minus a of 1. And this should be it, and this should be able to solve my problem. Yeah, I also have to return answer. So print group sort, let my array be 3 3 1 2 1, 3 3 1 2 1. Let's run the code. I'm not sure if that's the comp to key. Yeah. Uh, Comp to key in collections, Python. Comp to key. Func tool. It's not from collections, it's from func tool. Pardon my library import. Now it says built-in function is not subscriptable. What is not subscriptable? Key. Uh, can I call it K? I don't get it. What is the problem here? Built-in method is not subscriptable. Built-in function or oh, that's the problem. I should be using this instead of that. That was a big mistake. Never mind. Yep, the sorting should be mm, 1 2 3 2 2 1. 1 2 3 2 2 1. And this is my solution. Let's send the solution. Hmm. So this is it. Uh, hmm. Alright, so this is done, and while we get the result for this problem, let's try to fix the errors in this one. अभी इसमें I figured out something, not exactly, कोई फायदा नहीं है, it's still very weird. मतलब ये मेरे को समझ आ गया प्रीफिक्स से काउंट कैसे करना है, जितने बार सेम प्रीफिक्स आया उतने बार काउंट हो जाएगा, बट जब मुझे ये करने का बोला जाएगा कि अब तुम्हें काउंट की बजाय मैक्स लेंथ बतानी है, तो उस केस में ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं लगा सकता मैं, मेरे को somehow आई हैव टू यूज स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स का नहीं समझ आ रहा. अब मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग इंडेक्स में ऐसा क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स को कैसे मैं कंसिडरेशन में रख सकता हूँ करंट नंबर के साथ. वेल, जहाँ पे भी सम के बराबर हो, स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे कंसिडरेशन में होगा, जब जब तक सम के बराबर नहीं हो रहा. हाउ डज दैट मैटर? मे बी
स्टार्ट इनिशियली जीरो एंड जीरो एंड बड़ा बड़ा करंट सम हो गया 6 के बराबर। जैसे ही वो 6 के बराबर हुआ तो मुझे पता है कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स इस केस में ज़ीरो था। एंड जब 6 के बराबर हुआ तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स ज़ीरो रहेगा। ऐसे हम्म, फिर आगे बढ़ा, फिर 6 के बराबर हो गया। मान लो इन सब का सम ज़ीरो हो जाता है तो पूरा यहाँ पे जाके 6 के बराबर हो जाता है दोबारा। तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होना चाहिए था? ज़ीरो ही होना चाहिए था। कैसे यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे? ये सारे क्वेश्चंस अमेज़न ही पूछती है, घटिया कंपनी। We store the index of current sum in the hash map. Initially we have sum equal to 0, so map of 0 is -1. Traverse the array and increase the sum. Then we update the answer as this. मैंने exactly same चीज़ लिखी हुई है. That if it is not there, then you update it. Otherwise you take I minus map of cur sum -1, where the cur is prefix of I. Mm, mm. One second. Our code has some sort of runtime error. यहाँ तो कोई runtime error नहीं है, तो काहे की runtime error आएगी? हाँ, हम यहाँ पे थे. Um, if it is not defined, then I define it. Otherwise, if it is defined, then I say I minus this. क्या दिक्कत हो रही है? समझ नहीं आ रहा. Longest subarray with some k GFG.
क्या दिक्कत आ रही है? आह, सम अगर k के बराबर है तो मैक्स लेंथ में i+1, अगर सम माइनस k दिख रहा है, अगर सम k के बराबर है तो पता है ऐसे तुम्हारी डिक्शनरी का सब कुछ सॉल्व हो सकता था, प्रोबेबली, राइट? प्रोबेबली हो सकता है कि यही दिक्कत हो। अगर ये दिक्कत है तो मतलब वही है कि अगर -1 के बराबर है तो ऐड कर दो, i को बढ़ा दो। um, इधर चेक कर सकते हो तुम, if कर इक्वल टू k, then answer equals to max of answer comma i+1, and here is your elif. ये सबमिट क्यों नहीं हो रहा? मैंने सही तो कोड लिखा हुआ था। जी भाई, वेरी डिस्टर्बिंग क्वेश्चन। मतलब क्यों क्यों व्हाई वुड यू वांट टू किल मी? इजी। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वैलिडेट स्ट्रिंग विथ regex। ओके, क्वेश्चन ये है, create a regular that will match string that begin and end with the same letter. Regex for strings that begin and end at same letter. Import re and the regular expression is this. Regex is this regular expression. Let's say, what is it called? Regular expression. Regular expression. Pattern is nothing but something something. If pattern dot match, pattern is compile regular expression. Instead of doing that, what I can do is, when I'm saying pattern dot match some string, line number 20, so I'm gonna say dot 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 in line 20 में अभी है if pattern dot match some string, हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये, राइट, re dot search regex comma string, regex comma some string, some string, ठीक है? Clone the graph. Given a reference of node in a connected undirected graph, let's do this. Given a reference of a node in a connected undirected graph, return a deep copy of the graph. So you have a graph, and the graph is represented as a deep copy निकालनी है हमको, reference of a node in a connected undirected graph.
For simplicity, each node's value is the same as node's index. For example, first node is 1, second node is 2, and then so on. The graph is representing the test case using adjacency list. तो हमको मिलेगी नोड हमको एक नोड मिलेगी और हमको उसके नेबर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। अब हमको इस ग्राफ का एक क्लोन बनाना है। तो क्लोन बनाने का ये मेथड मैंने देखा हुआ है पहले से, मतलब मेरे को याद है, तो इट डजेंट रियली मैटर, मैं देख भी लूँगा। तो बात ऐसी है कि शुरू हो जाओ तुम नोड से, नोड को क्यू में डाल दो। अब उसके सारे जो भी तुम्हारे नेबर्स हैं, तुम ऐसे कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक डी क्यू में डाल दो नोड को, एक विजिटेड सेट बना लो दोबारा न जाने के लिए। और आंसर में तुमको आंसर रिटर्न करना है। आंसर में से आंसर एक डिक्शनरी बन गई जिसमें तुमने नोड डॉट वैल्यू पे एक नोड बना ली, ठीक है। अब तुम लेंथ ऑफ क्यू टॉप पॉप आउट करो, x इक्वल्स टू आंसर ऑफ टॉप डॉट वैल्यू, ठीक है। तो वो तुमको नोड मिल गई फॉर नई इन टॉप डॉट नेबर्स। टॉप के सारे नेबर्स में जाओ, अगर नेबर विजिटेड में नहीं है तो क्यू में डाल दो वो नेबर, विजिटेड में भी डाल दो, और आंसर में उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक नोड बना दो, ताकि हमें पता हो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। जब तुम सारे नेबर्स डाल चुके होगे तो जो तुम्हारा टॉप पे था उसके नेबर्स में तुम सिंपली आंसर ऑफ ने डॉट वैल्यू डाल दोगे। आंसर ऑफ ने डॉट वैल्यू, तो वो नेबर्स डल जाएंगे उसके नेबर्स में। अच्छा, समझ नहीं आ रहा कुछ। नॉट द मोस्ट आइडियल क्वेश्चन, मैंने सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ आ रहा। ये वाले प्रॉब्लम को हम किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं, जो या हम इसी तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। वन के नेबर आए 2 एंड 4, हैश मैप में 1 पे करस्पॉन्डिंग एक नोड हो गई 1। 2 नेबर पे गया मैं, तो 2 को मैंने 2 के करस्पॉन्डिंग नोड बना दी, 3 के करस्पॉन्डिंग भी एक नोड बना दी। अब मैंने 1 जो मेरा था उस पे मैंने नेबर्स में मैंने ये नोड अपेंड करा दी। तो 1 के नेबर में क्या हो गया, 1 का जो नोड था उसके नेबर में 2 और 3 नोड्स हो गई। अब जो पॉप होके आया वो 2, 2 का 2 तो जाएगा नहीं, 2 का 1 तो जाएगा नहीं, 3 जाएगा, राइट। 3 नेबर है उसका, तो 3 हमने 1 की केस में ही था ना, 3 1 की केस में 2 और 4 था, सॉरी। हाँ, 3 नेबर है तो 3 आया, 3 का यहाँ बना दिया, और इसके नेबर में जाके हमने 3 कर दिया, और हम 1 को भी ऐड करेंगे इसके नेबर में क्योंकि 1 भी इसका नेबर है, तो सिंपली हो जाएगा। तो इसमें यदि क्यों यूज़ करते हैं, तो मैंने इसको आई गेस ये जो क्लोन ग्राफ प्रॉब्लम है इसको मैंने ग्राइंड में रखा हुआ था। क्लोन ग्राफ, क्लोन ग्राफ, क्लोन ग्राफ, सच में नहीं रखा मैंने क्लोन ग्राफ को। अरे
ये उनमें से एक प्रॉब्लम है जिसको करने में मेरे को ज़रूरी है। क्लोन ग्राफ। अरे अरे अरे, शिट, क्लोन ग्राफ की लिंक क्या थी? क्लोन ग्राफ, ये रहा क्लोन ग्राफ। अरे यार, क्लोन ग्राफ में क्यू एंड डीएफए। ठीक है, इसमें से एक आध प्रॉब्लम ऐसा और होगा जो मेरे को ये मिनिमम डिफिकल्टी ऑफ अ जॉब शेड्यूल। मिनिमम डिफिकल्टी ऑफ जॉब शेड्यूल, इसमें तुमने क्या किया था? इसमें मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाई थी, बिकॉज मैंने ग्रीडी अप्रोच से ट्राई किया और हुआ नहीं, तो मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगानी पड़ी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैंने किस में लगाई? मैंने इसमें कट्स बनाए, एक रिकर्सिव फॉर्मूला लिखा सिंपल सा। रिकर्जन किया, मैंने बोला कि अगर किस पोजीशन पे हो तुम करेंटली, और अब तक तुम्हारा क्या कहते हैं, डी कितना बचा हुआ है, कितने कट्स बचे हुए हैं, और तुम किस पोजीशन पे हो। ठीक है, सिंपल दो चीज़ें, कितने कट्स बचे हुए हैं और तुम किस पोजीशन पे हो। ओके, अब तुम चेक कर लो, अगर तुम लास्ट पोजीशन पे हो या फिर और डी नहीं बचा हुआ और लास्ट पोजीशन पे हो तो ज़ीरो रिटर्न कर दो, वरना इनफाइनाइट रिटर्न कर दो, अगर है तो है रिटर्न कर दो। उसके बाद क्या, जिस पोजीशन पे हो वहाँ से लेकर के आगे तक जाते जाओ, हर जगह का करंट क्या होगा, अ, हर जगह का करंट होगा कि इस इंडेक्स तक का मैक्सिमम प्लस रिकर्जन ऑफ दैट, एंड आंसर कर दो मिनिमम ऑफ दिस और वो इसमें ऐड कर दो। इट इज़ लाइक द easiest shit in the world if you use memoization। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था। देन रिडंडेंट कनेक्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट वो भी बहुत ओपी प्रॉब्लम था। रिडंडेंट कनेक्शन, ये टू है, रिडंडेंट कनेक्शन टू। रिडंडेंट कनेक्शन वन बहुत आसानी से उससे हो जाता है हमारा सिंपल, हम सिंपल सा यूनियन फाइंड यूज़ करके कर सकते हैं, बट रिडंडेंट कनेक्शन टू में हमें यूनियन फाइंड के साथ साथ एक और चीज़ करनी पड़ेगी। इसमें यूनियन फाइंड के लिए तो होगा नहीं, इसमें हमको बेसिकली दो नोड्स बनाने पड़ते हैं, दो कैंडिडेट नोड्स, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसमें दो ही तीन केसेस बनेंगे। या तो साइकिल हो, साइकिल होने पे जो भी पहले मिल रहा हो वो वाला हो जाएगा, तो इस केस में साइकिल होने पे जो लास्ट में मिल रहा हो वो वाला, तो कैंडिडेट टू हो जाएगा। अगर साइकिल नहीं है तो जिसकी डिग्री वो है हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा था।
अच्छा, अब मुझे वापस से एक क्वेश्चन करना है, तो वापस से यहाँ आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है, बट फालतू में मेरे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम willing to do right now. Get encrypted number. Define get encrypted number for the numbers 4567 है, तो encrypted नंबर निकालना है। तो लिटरली इसमें यही करना होता है, while true लगा के numbers encrypted using Pascal triangle, पहले दो को ऐड करो। तो एक काम करो, तुम ऐसे कर लो, while true if length of numbers less than equal to 2 return number। तो रिटर्न करना है नंबर्स को रिटर्न करना है, मतलब क्या रिटर्न करना है, प्रॉपर नंबर रिटर्न करना है। तो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, राइट। रिटर्न दिस डॉट जॉइन नंबर्स, राइट। वरना क्या करोगे, तुम ऐड करोगे नंबर्स को। तो 4 5 6 7 के केस में यू विल start with the first one. You say temp equals to empty array. You say for I in range length of number temp dot append string of numbers of I plus numbers of I plus 1. This will go for -1. Then you're gonna say numbers equals to temp, and you're gonna return right there. So print get encrypted number for 4 5 6 7. 9113, what the hell? 9, then this is 11, and then this is, अच्छा तो यहाँ string नहीं लगा सकता, यहाँ तुम्हें करना पड़ेगा डॉट जॉइन oh not the thing, तो this is sum equal to this, and you have to say that sum is string of sum, and you have to say that sum is just the last, right, sum of -1, and you have to say sum is if sum it doesn't really matter, sum is int of sum, and you have to append sum. कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, ठीक है। I'm having second thoughts. It says that I expected this but found that. Okay. List map string comma numbers. 0 4 is the correct answer.
1 2 3 4 के केस में आंसर क्या आएगा? 82. What the hell? 82 ही आ रहा है, ठीक है। 4 और 5 के केस में ऑफ कोर्स 45 आएगा, बट ठीक है। इसमें कहीं ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस हैं क्या? तुम ओ ऑफ एन चल रहे हो यहाँ पे, यहाँ तुमने टेम्प में अपेंड किया। आई डोंट नो, चल जाना चाहिए। हाँ, ये हमने देख लिया। मिनिमम डिफिकल्टी इसको ऐड नहीं करना बिकॉज ये ठीक था, बट रिडंडेंट कनेक्शन वाज वेरी नाइस। इस केस में एज आई सेड के 3 ही केस बन रहे थे, तो उन तीनों केसेस को देखने का तरीका ये सिंपल सा था कि पहले तो तुम कैंडिडेट नोट्स निकाल लो। अब तुम क्या करो, सिंपली हर उसमें जाके देखो कि अगर इस पे 2 से ज़्यादा लोग इंसिडेंट हो रहे हैं तो उसको बना दो। अगर अब तक था नहीं, मतलब इफ़ इट वाज ऑलरेडी देयर, मतलब इस पे ऑलरेडी इंसिडेंट हो रहा था, तो C1 C2 निकाल दो, हैश मैप ऑफ y, x, y, वरना हैश मैप ऑफ y इज दिस। एनीवेज, उसके बाद तुम जाओ, अगर तुमको ऐसा लगे कि दोनों के पेरेंट मैच हो रहे हैं तो C1 रन नहीं है तो C1 दे दो, वरना H दे दो, अदरवाइज ऐड करते रहो। और अगर इसमें कुछ ना हो पाए तो C2 दे दो। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक माय इंटरेस्ट, माय फेवरेट क्वेश्चंस में से एक, रिडंडेंट कनेक्शंस 2। ऑल्दो 1 एंड 2 दोनों ही अच्छे हैं, बट 1 का सिंपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसमें कुछ है नहीं। कैंडिडेट नोट्स फॉर ऑल 3 कंडीशंस प्लस यूनियन फाइन, दोनों ही चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द क्वेश्चन जिसमें हम क्रिटिकल कनेक्शंस निकाल रहे थे, कोसराजू नहीं, इसमें कौन सी एल्गोरिदम लगती है? कोई तो एक एल्गोरिदम है, नेम्ड एल्गोरिदम, जिसमें हम टाइम नोट करते हैं डीएफएस में कि फर्स्ट डिस्कवरी टाइम वर्सेस द लोएस्ट वर्टेक्स टाइम दैट कैन बी रीच्ड फ्रॉम दिस वन, और इससे निकालते हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्रिटिकल कनेक्शंस in a graph, or you can say finding number of bridges inside of the graph. ये भी बहुत प्यारी एल्गोरिथम है। डिस्कवरी टाइम एंड लो टाइम इन डीएफएस, ये ऐसे हिंट हो गया ये हमारे लिए, नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तब के लिए। ओके, अब हम देखते हैं मैक्सिमम ऑफ ऑल सबएरेज ऑफ साइज के, similar to Amazon fresh question. I don't know what is fresh question. Okay. ये तो हो गया, हो जाना चाहिए ना, इसमें और कुछ नहीं करना है ना? कुछ तो टेस्ट केस फेल हुए होंगे।
maximum given a array of size n and an integer k. Find the maximum for each and every contiguous subarray of size k. Each and every contiguous subarray of size k, you have to find the maximum. but that's slightly easy. इसमें q dq कुछ तो यूज कर लो, हो जाना चाहिए. तो from collections import dq, let's say. देखो ठीक है, तो केस साइज की सवेरे बना लो. मैक्सिमम पुट करना है ना तुमको, मैक्सिमम होना चाहिए. तो 1 2 3 में ऐसे रखो कि सिर्फ मैक्सिमम वाला नंबर रहे, ठीक है. और मैक्सिमम वाले नंबर का इंडेक्स रख दो. तो इंडेक्स क्या है 3. तो अब नीचे करते जाओ. अरे बहुत ही इजी है, अरे बहुत ही एक्सट्रीमली इजी है. अभी तुम देखो मैं क्या करूँगा. q इक्वल टू dq of the empty array. Now for I in range q, k, sorry, for I in range q. मोस्टली क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, विच इज सो गुड. एक और क्वेश्चन हमें आया है, वो हम जल्दी से और कर देते हैं, ठीक है. उसके बाद हम शांति से कर सकते हैं होपफुली, बट ये क्वेश्चन को करना पड़ेगा हमें जल्दी से. क्वेश्चन है फाइंड अर्लीस्ट मंथ for the stock price. Okay, given stock price. अब तुम्हें क्या करना है, हर मंथ की एवरेज स्टॉक प्राइस निकालनी है और उसको तुमको मिनिमम नेट प्राइस चेंज 0% द सेकंड मंथ. ओके, तो min net price is 0, let's say. No, min net price is, let's say, float infinity. अरे infinity. अब तुम क्या करोगे, एक प्रीफिक्स बना लो जिसको एम्प्टी एरे बोल दो इनिशियली, या इसको स्टॉक प्राइस ऑफ 0 बोल दो. फॉर आई इन रेंज 1 से लेके लेंथ ऑफ स्टॉक प्राइस बोल लो. प्रीफिक्स डॉट अपेंड प्रीफिक्स ऑफ -1 प्लस स्टॉक प्राइस ऑफ आई. ये प्रीफिक्स हो गया, मिनिमम हो गया. रिटर्न मिन नेट प्राइस. अब तुम सिंपली लूप कर सकते हो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्टॉक प्राइस, ठीक है. प्रीफिक्स में तुम डायरेक्टली ये ऐड करने की बजाय इसका एवरेज ऐड करना, ठीक है. एवरेज कैसे ऐड करोगे, डोंट गेट इट, रुको. 1 एंड वो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है. तो वो लाइट है. हाँ, तो अभी तुम कर रहे हो 1 से, राइट. तो तुम ऐसे कर सकते हो, इफ आई इक्वल टू 0, आई 0 है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली स्टॉक प्राइस ऑफ आई, राइट. और राइट राइट क्या हो जाएगा मेरा, प्रीफिक्स ऑफ लेंथ ऑफ स्टॉक प्राइस माइनस आई -1, ठीक है. तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई, ठीक है. राइट इक्वल टू राइट right upon number of elements, which is length of stock price minus I -1. नहीं, -I -1 से नहीं होगा. कितने एलिमेंट्स होंगे, लेंथ क्या होगी, कितने एलिमेंट्स बचे होंगे. हाँ, इतने होंगे, ठीक है. एलिफ I इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टॉक प्राइस -1. तो इस केस में लेफ्ट क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ लेंथ ऑफ स्टॉक प्राइस -2. और राइट क्या हो जाएगा, स्टॉक प्राइस ऑफ आई. लेफ्ट goes to left upon length of stock price -1, right.
Right भी simply length of stock price minus 1. uh, ans equals to min of ans comma क्या चाहिए मेरे को डिफरेंस राइट एब्सोल्यूट डिफरेंस एब्सोल्यूट ऑफ राइट माइनस लेफ्ट ans equals to min of ans comma absolute of right minus left else for any other case left is gonna be prefix of I, right is gonna be prefix of length of stock price or simply prefix of the last element minus prefix of I plus 1, right? Prefix of I, ठीक है. Left equal to left upon कितने एलिमेंट्स होंगे I plus 1, I plus 1, right equal to right upon length of stock price minus I. अगर I 1 है और 4 है तो minus I minus 1. Answer equals to min of answer comma absolute of right minus left. Probably the ugliest piece of code I've written in a long time. Majorly because I'm dumb. Otherwise, it should have been very straightforward. 1 3 2 2 1 3 2 3. आंसर का आंस का है भाई. आंस की जगह मिन नेट प्राइस करो. एक काम करो आंस कर दो मिन नेट प्राइस की जगह, वो थोड़ा आसान पड़ेगा. चलो 0 आ रहा है आंसर. ठीक है 0 तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर मेरा 1 कम सिर्फ 1 होता, एक ही एलिमेंट होता, अगर इंटीजर डिविजन बाय 0. इंडेक्स इक्वल्स टू -1. इंडेक्स रिटर्न करना है. अब तो और गंदा लग रहा है मेरे को ये कोड देखते हुए. If answer greater than absolute of right minus left, index equal to I. Also चलो यहाँ पे जल्दी से कर देते हैं. If length of stock price equal to 1, then return difference क्या ही आएगा, return 1, right? One 3 2 3. And it occurs in the second month. मतलब month 1 month 2 month 2. 2 का मतलब क्या हुआ? देखो month 1 का मतलब हुआ कि सिर्फ इसको लिया I equal to 0. लास्ट मंथ का मतलब हुआ कि लेफ्ट में सारे एलिमेंट आएंगे, राइट में सिर्फ वही आएगा अकेला.
Some people are saying that पीसी के असाइनमेंट के मार्क्स आ गए। आज स्ट्रीम पे हम मार्क्स चेक करेंगे। मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि 2 मार्क्स तो आ जाने चाहिए। अगर 2 भी आते हैं आई विल बी हैप्पी एज हेल। मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर 2 भी आते हैं तो। चेक ही नहीं हुआ अब तक। है प्लीज़ 2 मार्क्स तो दे दो मैम प्लीज़। देखो मैंने कुछ भी लिखा था, कुछ भी लिटरली। आई शो यू। We have to show something, we did something and I faked it. I was like let's fake it. अगर 2-3 में आते हैं तो भी चलेगा, चलो कोई ना, वो सब छोड़ो। मैक्सिमम ऑफ ऑल, हाँ ठीक है। फॉर आई इन रेंज के अब तुम क्या करोगे, जो करंट नंबर है वो क्या है तुम्हारा, एरे ऑफ आई, एक लेंथ ऑफ क्यू एंड क्यू ऑफ -1। इसके टॉप वाला जो नंबर है वो उसका एरे, अगर उसको टॉप पे बड़ा नंबर आता है तो इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, while length of q and array of q of -1 is smaller than the current number, sorry, q dot pop, right, सारे पॉप कर दो, q dot append I, ठीक है। एक बार प्रिंट q करा के देखूँ मैं, रिटर्न एक खाली अरे करा लेते हैं, बट मेरे को टेस्ट करना है, फॉर टेस्टिंग पर्पसेस आई नीड टू नो दिस। TQ में सिर्फ 2 है, इसका मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे सबसे बड़ा आ रहा है, तो सिर्फ वही रखा हुआ है मैंने, छोटे बटे को मैं रखता नहीं हूँ, ठीक है। ओके, लेट अस अज्यूम कि ऐसे करते हैं, आई इक्वल टू, अच्छा अभी काम कर सकता हूँ मैं, आंसर एरे बना सकता हूँ और मेरे को आंसर एरे रिटर्न करनी है। तो अब मैं शुरू करूँगा, स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू स्टार्ट प्लस आई डोंट नो के, while end is less than length of array, तब तक सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें जो भी क्यूब में वैल्यू है वो निकालनी है, ठीक है। x इक्वल्स टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, क्यू डॉट पॉप पॉप करनी चाहिए क्या, हाँ क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, नहीं क्यू डॉट क्यू ऑफ 0, तो आंसर डॉट अपेंड क्यू ऑफ 0, ठीक है। अब तुम्हें स्टार्ट को एक बढ़ाना है, एंड को एक बढ़ाना है, ठीक है। अब तुम्हें ये चीज़ रिफ्लेक्ट करवानी है क्यू में, तो फिर से एक चीज़ देखो, फिर से एक चीज़ देखो, ठीक है। तुम स्टार्ट को एक बढ़ाए तो तुम्हें क्यू में से, फ्रंट में से देखते जाओ, क्या देखते जाओ, ये बाय द वे इसको ऐसे करना पड़ेगा मुझे, एरे ऑफ क्यू ऑफ 0, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब तुम एक चीज़ देख सकते जा सकते हो यहाँ से, while length of q and q of 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू स्टार्ट, or maybe just say less than start and you can increase the start immediately, and you say while this is less than start q dot popular, निकाल दिए सारे नंबर्स, निकाल दिए। अब जो n+1 हुआ तुमको एक नया नंबर मिला, राइट, अब एक नया नंबर मिला, अब इस नए नंबर के साथ क्या करना है, इस नए नंबर को, तो इस हिसाब से 2 बड़ा है q ऑफ 0 से, नहीं q ऑफ 0 2 छोटा नहीं है तो नहीं होगा,
तो fuck it. End plus equal to 1 if end is end is equal to length of array, वरना कर इक्वल टू array of end जो कि है 1, तो कुछ भी पॉप नहीं होगा, क्यू में अपेंड हो जाएगा 1. नेक्स्ट प्रिंट क्यू कॉमा स्टार्ट कॉमा एंड मे बी क्यू कॉमा आंसर ही ठीक है. क्यू में इनिशियली 2 है, फिर क्यू में 2 है, फिर क्यू में 4 है. ऐसा कैसे? क्या करूं? थोड़ा सा दिक्कत सा हो रहा है. स्ट्रीम प्ले नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है मेरे को. नहीं, स्ट्रीम प्ले हो रही है. चलो, मैं कह रहा था, हाँ, यहाँ 4 क्यों आया? 2 पॉप हुआ होगा, पर 2 को पॉप होना ही नहीं चाहिए था. यहाँ बोल रहा है while length of q and array of q of -1 which is 3. क्या 3 छोटा है? array of from कर is array of end is nothing but um, 1 in this case, and if the array of end is 1, 0, 1, 2, 3, oh shit, start is 0 and the length is supposed to be 3. 0 plus 3 is 3, end is 3, end is 3 here. Maybe I should have done this. Yes, I should have done this. This makes a lot of sense. 3345556. अगर कहीं दिक्कत आएगी तो हम फिक्स कर लेंगे, बट अभी के लिए ये ठीक है. नहीं आएगी दिक्कत बिकॉज हम बहुत प्रो हैं इसमें. चलो, ये क्वेश्चन हम एटलीस्ट 10 बार करे होंगे, तो हु केयर्स. चलो इसको कलर कर देते हैं. अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो प्रॉब्लम आ रही है. आई एज्यूम कि ये कोड फेल हो जाएगा, बट नॉट सो क्विकली ब्रो. बट ठीक है, अभी फेल हो गया तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा. क्या ही दिक्कत आ रही है इसमें? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि मैं समझ सकता हूँ इसमें दिक्कत क्या आ रही है, बट क्या मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूँ? अब की बार मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखूंगा, क्योंकि ये बहुत गंदा लग रहा है. तो फिर फेल होना राजनी था.
5 1. So our input was 5 1 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5 1 3 2 4 comma 5. Expected 3 our 1 expected 3 था but the answer is 1. Expected 3 था 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5. Expected output था 3 1 3 1 3 2 4 5. क्या 5 1 2 3 4 5 है? आई डाउट ऐसा होगा इसके तो आई हाईली डाउट राइट ऐसा तो नहीं होगा हाँ mm, mm, 1 3 2 4 5. I'm facing some issues, some technical issues right now with this problem. So just give me a second. Hmm. And the input is 1 3 2 4 5. So the 1 4 6 10 15 and the minimum change. For example, in first month it's gonna be 1 minus the sum of this entire thing, which is 14 upon 4. So 4 3. So this is gonna be equal to 2. Next up it's gonna be 4, right? If otherwise it's gonna be prefix of I. The prefix of I is 4. Right is prefix of -1 minus prefix of I. 15 में से 4 गया 11. 11 4 upon I plus 1 2 and 11 upon length of I, which is 5 minus 1 4 minus 1 3. ठीक है तो this is 2 and this is 3 3 जा so this is equal to 1 difference, right? Similarly, next up it's going to be 6 upon 3 minus 15 minus 6, which is just 9 upon 2. So this is 2 and this is 4. So this is again 2. Next up we can simply have 10 upon 4. 10 upon 4 minus 5. uh, 10 upon 4 minus just the 5, right? Yes. तो 5 नंबर के लिए हमारे पास सिर्फ 4 आ रहे हैं ऐसा कैसे ऐसा ऐसे कि एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा जब तुम यहाँ पे होगे तो उसका कोई सेंस नहीं है राइट तो 3 का प्लस 4 राइट का क्या होगा लेंथ ऑफ स्टॉक प्राइस विच इज 5 माइनस 4 मतलब 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1
तो ये हो जाएगा, सब ये वाला तो इससे हो जाएगा। और अगर ज़ीरो होगा तो लेंथ प्रीफिक्स ऑफ आई, ये प्रीफिक्स ऑफ दिस माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई, लेफ्ट इक्वल्स टू 0 प्लस 1 1, लेंथ ऑफ स्टॉक प्राइस 0 है तो माइनस 1। सब कुछ इतने से हो जाना चाहिए, सब कुछ इतने से हो जाना चाहिए, which is kind of weird to be honest. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो, इसी बहाने। मैक्सिमम सम ऑफ नॉन एडजेसेंट नोड्स। Given a binary tree with value associated with each node, we need to choose a subset of um, these nodes such that sum of chosen node is maximum under a constraint that node to chosen इसने क्या लिखा है, लेफ्ट इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई, राइट इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ माइनस वन माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई, लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट वन आई प्लस वन, राइट इक्वल टू राइट length of stock price minus I minus 1. If answer is greater than absolute of right minus left, index equals to plus 1. Answer equals to minimum of answer, comma absolute of right minus left, return index. Expected 3-hour one.
1 comma 3, 2 comma 3, 2 comma 4, 2 comma 5. Bro, I should play some music because मैं given a binary tree, we need to choose a subset uh, of these nodes such that sum of chosen nodes is maximum under a constraint that node to chosen nodes in the subset should be directly connected. That is, if we ever taken a node in our sum, then we can take any other children or parent into consideration and vice versa. Okay. Input binary tree chosen nodes for the maximum sum. ठीक है ठीक है नॉन एडजेसेंट होनी चाहिए नोट्स बस एक ही कंडीशन है ठीक है ओके ओके ये कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19
लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस एक प्रॉब्लम है, आई एम नॉट श्योर, बट वो मैं मेरे को पता है कि मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज बहुत बार ट्राई किया, हुई नहीं कभी तो। बट चलो ये वाली कर लेते हैं, इसके बाद स्ट्रीम बंद करते हैं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहा हूँ। 2 घंटे हो गए मेरे को आज स्ट्रीम करते हुए। काफ़ी अच्छी स्ट्रीम गई है ना, 2 घंटे, मतलब आज की परफॉर्मेंस अच्छी थी। आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक द फैक्ट कि आज की परफॉर्मेंस अच्छी थी। ऑल दो द रियलिटी इज के फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने स्ट्रीम इतने अच्छे से करी नहीं है कंसिस्टेंटली इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ वीक्स, नॉट वीक्स, डेज। वीक्स कहाँ से होंगे, डेज, इन द पास्ट कपल ऑफ डेज। बट ठीक है, आई एम ट्राइंग टू डू इट नाउ, देखते हैं कितना